अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना असेंबली में पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किए जाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर अरकान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि साल 1918 से PAC का कायम अमल में लाते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन को इसका चेयरमैन मुकर्रर किया जाता है। उन्होंने इस मर्तबा ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। शेख शाहिद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़, हैदराबाद। And I would like to just brief that for the first time a member of opposition was appointed as the chairman of committee for public accounts in the year 1958 and 59. Since then, this practice is being continued in the state. After constitution of the second Telangana Legislative Assembly, I got the opportunity to be as a chairman of Public Accounts Committee. So you're also aware that the following reports of CNAG pertaining to the state are being laid before the legislature every year under the Article 151/2 of the Constitution of India. First is the finance accounts, the second is appropriation accounts, the third is general and social sector audit, revenue sector, fifth is economic sector, sixth is state finances, seventh is local bodies, eighth is public sector undertaking. The Accountant General of Telangana attends the sitting of the committee and also assists the committee by appointing out the important items in accounts which should be scrutinized by the committee. First, the committee makes a selection of subjects in the various reports of the CNAG laid before the legislature for examination. And then after obtaining of all the points connected with the examination of subjects, the committee frames its recommendation in form of a report for presentation to the legislature. With the honorable members of the committee to please attend the meeting regularly and give your suggestions in examination of audit paras. And before concluding, I once again extend my thanks to the Honorable Chairman, Legislative Council, and Honorable Speaker and Minister for Legislative Affairs, and the members. डेंटिवाइज डेंटल हॉस्पिटल, तजुर्बेकार डेंटिस्ट से राब्ता कीजिए। मुकम्मल डेंटल ट्रीटमेंट दस्तयाब, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कंप्लीट डेंचर्स, ब्लीचिंग, लेजर ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट्स, डिजिटल एक्सरे भी अवेलेबल, हाइजीनिक माहौल, वाजबी फीस और कम कीमत में प्रोसीजर, दांतों के हर किस्म के अमराज के शिफा का मरकज। डेंटिवाइज डेंटल हॉस्पिटल, डेंटिवाइज डेंटल हॉस्पिटल बिसाइड कोहिनूर गार्डन फंक्शन हॉल, हाफिज बाबानगर, DRTL मेन रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7207-428300 और 040-2444-8300। अलबरकत क्लासिक मंदी अरेबियन रेस्टोरेंट पेश करते हैं यमनी मंदी के तर्ज पर असली हवाइज व यमनी मसालोदार जमीन के अंदर पकाए जाने वाली असली अरेबियन मंदी। अरेबियन मंदी डिशेस की पहचान, मेहमान नवाजी की शान। अलबरकत क्लासिक मंदी अरेबियन रेस्टोरेंट, मुकम्मल एयर कंडीशन डाइनिंग हॉल, सेपरेट फैमिली सेक्शन के साथ आप तमाम की खिदमत में हाजिर है। असली अरेबियन मंदी के चाहने वालों के लिए खुशखबरी, फुल चिकन मंदी सिर्फ 199 रुपए में। इसके अलावा मटन मंदी, फुल गोट मंदी, लम लेग मंदी, फहाम मंदी, मटन खबसा भी मौजूद है। इसके अलावा पार्टी और फंक्शंस के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। स्विगी पर भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अपोजिट DRDL टाउनशिप गेट, कंचनबाग, फर्स्ट फ्लोर, हैदराबाद।